जय जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनम् सर्वालङ्कारयुक्तम् अवहनरुचिरं संयुक्तं जाग्रतेन भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्र सेव्यं देवानां सारमेशं सुजन परिवृतं ब्रह्मदारु नमामि। परम कारुणिक अनंत कोटि ब्रह्मांडर मौनमणि कोटि कोटि ओडियांकर हृदयर आराध्य देवता समग्र विश्व चराचर स्रष्टा आनंद कंद परमानंद सचिदानंद अखिल रसघन विग्रह विश्व वेदनार वैद्य देवादि देव श्री श्री जगन्नाथंकर चरण कमल रे ए अकिंचनर कोटि कोटि प्रणाम। I offer my respectful obeisance to unto the lotus feet of our spiritual Guru Lord Sri 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 Jagannath. I, Dr. Namita Patnaik, the Assistant State Commissioner Guide, Odisha State Bharat Scouts and Guide, being the host and on this convener of this webinar, 42 number. Today is the 42 number of our webinar episode. So I invite all the viewers to this Google board. I offer my humble submission and profound veneration to our Scout Guide Guru, Dr. K.P. Mr. Sir, whose virtual blessing inspired us to conduct such series of webinars at national level by inviting friends from different states of our country. I also offer my respectful submission to Dr. Aditya Prasad Samal, the president of this webinar, the principal of Maharshi College of Natural Law. He is the constant source of inspiration for me for conducting such webinars during this pandemic. I invite Dr. Urmi Devi, the reader in Odia, Maharshi College of Natural Law, to this Google board. I also invite a new face, a President Guide awardee, a versatile singer of Odisha, Mrs. Chaudhary Ranjita Sanapati, to this Google board. I also invite Mr. M.K. Mansingh, Rover Scout leader, to this Google board. And my special invitee, who is always with us, Dr. Prasant Kumar Misesa, the leader trainer, senior most leader trainer of Odisha State Bharat Scouts and Guide. He is, although a retired headmaster, but once a scout is always a scout. So scout can never be retired. So thanks to our Guru, Prasant Sir, I welcome him to this Google board. And now it's time to welcome, invite, because speech will be given by Dr. Prasant Sir. So now I feel proud
and privileged. Our chief speaker, Dr. Guru Prasad Mahapatra sir, a great research scholar of Jagannath culture and the senior lecturer in English in Kanarsa College, Puri, who has also completed post-graduation in many, almost 2 or 3 subjects. So nothing more to say about him, only the Sebak of Jai Jagannath, that's all. So now it's time to, first of all, I must welcome our guest with a small flower bouquet virtually. Then we'll go for a Sundar, beautiful song, Jagannath Bhajan from Ranjita ma'am. So now, Guru Prasad sir. Thank you, sir. Thank you very much. Now, it's time to listen a welcome song, that is Jagannath Bhajan. I just want to tell about this Sangeet because, you know, okay. So before I request Mrs. Chaudhary Ranjita Senapati, a veteran singer of Orissa, who is also a President Guide Awardee of Government Girls High School Unit 6, Bhubaneswar. She is also the empaneled singer of DDK and All India Radio. To offer her prayer to Lord Jagannath, I'll request her. And the background of this song is that this song is the introduction song of Jagannatha Besa, which is produced and directed by Dr. K.P. Mishra sir. So if he would have been here, he could have been very happy to listen to Ranjita ma'am. So now over to Ranjita ma'am. Madam, you are unmuted, please. Mute yourself. Unmute yourself. मोबाइल में अनम्यूट कर लीजिए. हाँ. Yes. हाँ. एबे सुबीचे. Yes. मन देखो हो कालियार भेड़ी की रे, हे मन देखो कालियार भेड़ी की रे, 12 मासी तेरो जात लगाई, 12 मासी तेरो जात लगाई, बेस होई भणी भणी धीरे, मन देखा कालियार भेड़ी की रे, कालियार भेड़ी की रे, बैसाखे चंदन ज्येष्ठी गजानन, आषाढ़े रथे दी दर्शन, भाद्रव मासरे बैसाखे चंदन ज्येष्ठी गजानन, आषाढ़े रथे दी दर्शन, श्रावण मासरे चित्त लागिबे भाद्रवे कालिया दळन रे, मन देखा कालियार भेड़ी की रे, कालियार भेड़ी की रे. Thank you. Thank you very much. And this is the very famous song at that time. And this is the introduction song of
KP Sir's production, that is Jagannatha Besa. Thank you, Ranita Madam. You have Thank you. accepted our request and sing this song very nicely. Now, I request Dr. Prasant Kumar Mishra Sir, the leader trainer, the senior most leader trainer of Odisha State Bharat Scouts and Guide, to welcome the viewers and the chief speaker and all of them. Over to Dr. Prasant Mishra Sir. महासिंधु तीरे महानंद कंदम प्रलंबारी देवी सुभद्रा समेतम वसंतम वैकुंठे सदाहं तमाद्यं जगन्नाथ देवं शरणं प्रपद्ये जत्कीर्तनं जत्स्मरणं जदीक्षणं जतबंधनं जत्श्रवणं जदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कलमसं तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। परम कारुणिक जगत पालक सृष्टि स्थिति संहार कारक परम ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद श्री श्री नीलाचलवासी श्री चतुर्धा मूर्तिंकर चरणार बिंदरे ए अधमर सतर्क कोटि नमन करिवा पूर्वक मु प्रथमे स्वागत करुछि महर्षि महाविद्यालय अध्यापिका डॉक्टर नमिता पट्टनायक महोदय को जे कि एपरि बहुत वेबिनार करिसंती जगन्नाथंकर से कारुणिक कार्यावली उपरे तांकर लीला उपरे तांको मु सर्वप्रथमे स्वागत करुछि। मु स्वागत करुछि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स रो जे होचंदी ओडिशा स्टेट चीफ कमिश्नर तथा वाइस प्रेसिडेंट नेशनल हेडक्वार्टर श्रीयुक्त केपी मिश्र काली प्रसाद मिश्र महोदय, श्रीयुक्त राममूर्ति दोरा महोदय जे कि आम स्टेट रो संपादक, एसओसी गाइड श्रीमती अनामिका दास, एसटीसी महापात्र मैडम, एसटीसी सुरजीत सेन, जॉइंट सेक्रेटरी मिहिर रंजन पट्टनायक एवं समस्त स्टाफ भारत स्काउट्स गाइड्स रो सेमानंको मु स्वागत जणाउछि। कारण सेमानंकर साहाय्य सहयोग माध्यम रे ए कार्यक्रम अनुष्ठित होउछि। मु एही परिप्रेक्षी रे स्वागत जणाउछि ए जो महाविद्यालय समस्त अध्यापक अध्यापिका सर्वोपरि अध्यक्ष महोदय को जे कि बहु समय प्रदान करिसेंती कार्यक्रम संपादन करिया पई से समस्त को मो तरफ अशेष अशेष धन्यवाद सहित स्वागत जणाउछि। मु स्वागत जणाउछि जो माने एठी उपस्थित हिचंती ए कार्यक्रम को श्रवण करिवा पई स्कंद पुराण विषय रे सेमानंकु मु समस्त को स्वागत जणाउछि। सर्वोपरि जेपरि कहा जाए कन्हई नथिरे दोलयात्रा असार सेही परि जहांको जोगु आम कि एकत्रित होइचे भगवत कथा श्रवण करिया पई उपस्थित होइचे महान ग्रंथ स्कंद पुराण ताकु श्रवण करिया पई जे उपस्थित होइचे से अन्य केही नहंती प्रवक्ता आध्यात्मिक कथामृत एवं श्री जगन्नाथ संस्कृति गवेषक कणास महाविद्यालय अध्यापक डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्र महोदय से महाशय को मु धन्यवाद जणाउछि, स्वागत जणाउछि एही वेबिनार को कार्यक्रम संपादन करिया पई। एही परिप्रेक्षी रे मु टिके कहि रखे जे स्कंद पुराण होचंती जेते सब पुराण अछंती अष्टादश पुराण व्यासंक द्वारा रचना करा जाईछि। मद्वयम भद्वयम चैव वत्रयम व चतुष्टयम अनाप लिंग पुष्कानि पुराणानि अष्टादश। ए अष्टादश पुराण मध्य रे सबुठारु श्रेष्ठ होचंती स्कंद पुराण। विष्णुंकर अवतार मध्य रे समस्त पुराण रहिचंती एवं स्कंद पुराण होचंती रोम राशि। भगवान विष्णुंकर लोम होची स्कंद पुराण। विभिन्न पुराण भगवान विष्णुंकर विभिन्न अंग रहिचंती। अष्टादश पुराण मध्य रे स्कंद पुराणंकर स्थान होचंती भगवान ब्रह्म परम ब्रह्म विष्णुंकर लोम रोम राशि।
एइथरे वर्णना करा जाइछन्ती जे जो पुराण कथा हम आलोचना करूछु इतिहास पुराणम पंचमम वेदानम वेदम न्याय दर्शन रे कहा जाइछि इतिहास पुराण होउछि पंचम वेद एवं एइथरे वर्णना करा जाइछि पुराण होउछन्ती कृष्ण स्वरूप तस्मादि आदि हरे प्रीति रुत्पादे धीमते मतिः श्रोतव्यम मनीषम पुंभिः पुराणम कृष्ण रूपिणः ए पुराण को कृष्ण रूपी पुराण को समस्त पुरुष माने बारंबार पठन करिवा दरकार श्रवण करिवा दरकार एथि पई एई पुराण उपयोगी स्कंद पुराण विषय आलोचना चक्र अनुष्ठित होउची एवं कहा जाइछन्ती जोठी तुलसी काननम जत्र जत्र पद्म बनानि च पुराणम पठनम जत्र तत्र सन्निहितो हरिः जो जो स्थान में पुराण पठन करा जाए पाठन करा जाए श्रवण करा जाए से स्थान रे पद्मवन सृष्टि हुए तुलसी कानन सृष्टि हुए एवं भगवान विष्णु से स्थान रे रुहंती एवं पुराण जो कहते अष्टादश पुराण से अष्टादश पुराण मध्य रे सर्वबृहत पुराण होउचंती स्कंद पुराण ए स्कंद पुराण रे विभिन्न कथा 81,000 श्लोक रहिचंती 81,000 श्लोक समस्त पुराण को यदि मिसा जाए तारे 4 लाख ऊर्ध्व श्लोक अछंती तन्मध्यरु स्कंद पुराण रहिचंती 81,000 श्लोक रहिचंती तेनु ए जो कथा रे एथरे वर्णना करा जाइचंती उत्कल खंड मध्य रहिचंती जो उत्कल खंड रे भगवान विष्णुंकर जगन्नाथंकर तथ्य मध्य वर्णना कराइछि एवं एथिरे मुख्यतः बद्रिकाश्रम अयोध्या पुरी रामेश्वर कन्याकुमारी सागर संगम द्वारका काशी मथुरा हटकेश्वर इत्यादि तीर्थ महिमा वर्णना करा जाइछि गंगा नर्मदा नदी मानकर पावन कथा वर्णित होइछि धर्म सदाचार भक्ति ज्ञान वैराग्य यज्ञ दान तप पूजा उपासना वर्णना करा जाइछि विशेषतः होउछि ए स्कंद पुराण रे भारतर भौगोलिक ज्ञान सहित प्राचीनता संपूर्ण इतिहास को संरक्षित करा जाइछि स्कंद होउचंती कार्तिकेय जो तारकासुर को वध करिवा पई भगवान विष्णु को निकट रे समस्त प्रार्थनारत थिले एवं तारकासुर मारिवा पई भगवान विष्णु सृष्टि कले कार्तिकेयंकु तांकर अन्य नाम होछि स्कंद तांकर नाम होछि कार्तिकेय एवं से जन्म ग्रहण कले गंगा नदी कूल रे सरवण सृष्टि होइथिबारु तांकर नाम होछि सरवण भव तेनु तांकर जो से जन्म नेले सडम मातृका इच्छा प्रकट कले तांको केमते क्षीरपान करेइबे से मातृसुलभ कथा को विचार करी भगवान स्कंद ये होचंती कार्तिकेय 6टी मुंड हेले 6 मां को संतुष्ट करिया पई तेनु तांकर ना हला सडमातुर एवं सडानन एवं से जो स्कंदक द्वारा वर्णना करा जाइथिबारु यार ना होची स्कंद पुराण जहा हो सेथरे हमें जीवन मत दिया जाइछि जति कर्तव्य मु पुणी थरे सेही महाशयन को स्वागत करूची एवं भगवान जो पावन कथा वर्णित होइचंती जो स्कंद पुराण रे से स्कंद पुराण को आलोचना करिवा पई डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्र महोदय जी होचंती जने श्रेष्ठ प्रवक्ता आध्यात्मिक कथामृत सागर एवं श्री जगन्नाथ संस्कृत जने गवेषक एवं वर्तमान अवस्थापित होइचंती कणास महाविद्यालय रे अध्यापक भाव रे मु समस्त को पुणी थरे साधुवाद ज्ञापन करिवा पूर्वक ए आध्यात्मिक कार्यक्रम आरंभ करिवा पई मु से महादय डॉक्टर महापात्र महोदय को पुणी थरे स्वागत जणिया पूर्वक स्वागत भाषण समापन करूची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ओवर टू डॉक्टर नमिता महापात्र sorry Namita Patnaik. Thank you sir, very nice to listen everything, very detailed thing about Skanda Puran. So before going to Dr. Mahapatra, I just enlighten a few points to sir.
sir, we are having some friends from like Satish ji, Mandal Sa, and Mustafa ji from Srinagar, they are from Jharkhand and some other states, and they like our Lord Jagannath very much, and they like our program very much, sir. So may I request you in between to speak something in English or Hindi, so that when they feel happy, and they can also ask you. So Yes, yes, madam. yes, because they like Odisha very much. Every day they join in our program in time. कभी भी लेट नहीं होते हैं उनके लिए. So the inclusion of this tremendous amount of pilgrim guides, that is Tirtha Mahatma in our Skanda Puran, and the creation of universe, that is cosmology or mythology, history, genealogy, that is Vamsa. Vamsa means, ancient literature in Buddhism, Jainism, Hinduism, and all these festivals, jatras, dharma, that is virtuous lifestyle. So all these things are included here, sir, for the information of my friends from neighboring states. So since sir is the professor in English, and he is having very research experience, he will definitely satisfy your points, your queries. So now over to Dr. Guru Prasad Mahapatra sir. Am I audible? Yes, sir. Diba? Yes, sir. Hari Om. Udyataniradhanila sundaratanam Purnendu bimbananam Rajivotpara netra jugalam कारुण्यवारानिधिं भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्तार्थि चिन्तामणि वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणि हृदभ्यां शोभितलाङ्गलं समुषणं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाढ्यं वरकुण्डलैर्भुजबलैराक्रान्तभूमण्डलम् वज्राभाचलचारुगण्डजुगलै नागेन्द्रचूडोज्ज्वलम् संग्रामे चपलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपालं भजे मध्ये देवी परात् परा भगवती जल्लादिनी रूपिणी निर्लिप्ता गुप्त देहा त्रिभुवन जननी सूक्ष्म रूपा विचित्रा देवी मानंद कंदा कनकतनुधरा सर्व सौभाग्य रूपा देहि में शुद्ध भक्ति हरिपद जुगले जोग माया स्मरामि कल्पान्तार्क प्रकाशं त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तं रक्ताक्षं पिङ्गकेशं रिपुकुलभयदं भीमद्रष्टाट्टहासं चक्रं शङ्खगदाद्मे पृथुचरमुसलं चापपाशाकुशास्नवैः बिभ्राणं दुर्भिराद्यं मनसि मुररिपुं भावये चक्रसंज्ञं कोटि कैवल्यनाथ जगन्नाथ कोटिए प्रणाम घेन कोटि जन्मर अघनाशकारी
कोटि जन प्राण धन कोटि नयन रमणी कोटि काम कांति कला दारु मूर्ति कोटि ब्रह्मांड बिंधाणी। हे जगत बंधु जगत जीवन जगन्नाथ महाप्रभु आपणकर से अदेखा चरण तले अनंत प्रणति ढालुछि निजर कथा को निजे कुह प्रभु एतिकी कामना रखुछि। जगमोहन जगन्नाथ महाप्रभु तत्सहित चतुर्धा विग्रहंकर अदेखा श्री चरणार बिंदरे अनंत कोटि दंडवत सुंदर भावरे उपस्थापन करुथिले पूज्य प्रशांत मिश्र महोदय। पुराण पठनं जत्र जत्र पद्म बनानि च तुलसी कानन जत्र तत्र हरि सदा बसेत। से श्रीहरिंकर श्रीचरणार बिंदरे निजको समर्पण कला परे ये जो भव्य आयोजन करा जाइछंती ए आयोजन सूत्रधर नमिता मैम केपी मिश्र सार एवं श्री जगन्नाथଙ୍କ सहित जोड़ी हवा पाई ये कथा सहित जोड़ी हेबा पाई आग्रह रखिथिबा समस्त महानुभव मानंकु मोर प्रणाम। अनेक शुणुली अनेक वेबिनार माध्यम रे आपण माने जगन्नाथ महाप्रभु विषय शुणी सारी लेनी किंतु गोटे कथा मन रखिबा आमे जगमोहन जगन्नाथ महाप्रभु को जो परि भाव में बुझुचे प्रकृत रे ठाकुर ताहा नुहंती। जितेबेले आमे पचारुछु ये जगन्नाथ महाप्रभु किए ओनली वन आंसर इज देयर भारते चोत्कोल देशे भूस्वर्गे पुरुषोत्तमे दारू रूपी जगन्नाथ भक्तानंग अभयं प्रद। भारते चोत्कोल देशे भारतवर्षर उत्कल भूखंडर पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जी अछंती किए अछंती महाप्रभु जगमोहन जगन्नाथ अछंती। भारते चोत्कोल देशे भूस्वर्गे पुरुषोत्तमे ये जो earthly paradise which we called पुरुषोत्तम क्षेत्र there is Lord Jagannath in form of wooden figure. He is not a wood, he is not log, in form of log, just incarnation of Lord Jagannath. What for he is? Bhaktanang abhayam prada. In our scripture it has been written खंडनाथ सर्व दुखानाम अखंडानंद दानतः। स्वभावात दारुरेश ही परम ब्रह्म विधीयते खंडनाथ सर्व दुखानाम। God is there to reduce, to destroy all the worries, all the sorrows, all the pains that has been unconsciously attached with our life. Khandana sarva dukkhanam. God is there to reduce our pain and include our pleasure. Akhandananda danatah. अखंड आनंद दान करिबा पाई जे महाप्रभु रहिचंती से महाप्रभु स्वभावत इट इज हिज नेचर, इट इज हिज कैरेक्टर, इट इज हिज क्वालिटी। स्वभावत इट इज हिज स्वभाव। स्वभाव भगवानंकर वही स्वभाव है कि वो आनंद प्रदान करने वाले हैं। He provides us eternal peace, eternal pleasure. Before we go into that holy script, holy epic Skanda Puran, हमें गोटे कथा मन रखिबा। चाहिंदले किए कढ़ीटीए केबे फुटी जाए नहीं फूल होई। चाहिंदले कहा पापुल रे चंद रही जाए नहीं बंदी होई। आमे चाहे बा न चाहे दिन हेबो
आमे चाहेबा न चाहे राति हेबो आम चाहिबारे माने किछि नहीं जहा हेबा कथा ता हेबो एवरीथिंग प्री रिटन एवरीथिंग प्री प्लान्ड whether we like it or not that does not matter whether we want it or not that does not matter whatever takes place in this world everything is planned and directed by Lord we have to accept it we have to accept it but आमे जते बेले थी एकाठी हुई छे when we are gathered here at least we should know what Jagannath is, what Jagannath Sanskriti is, and in which way Lord inspires us, and what is the message of Skanda Purana. Namita ma'am has informed me, sir, we shall go on discussing regarding Skanda Purana, and we should know that in Skanda Purana there are 60 chapters. Although 80,000 slokas are there, but Jagannath Mahatmya, Sri Purushottam Mahatmya, it is from Utkala Khanda. Skanda Purana जो Utkala Khanda बोली गोटे अंश रही आसी पुरुषोत्तम महात्म्य 60 chapters are there 60 अध्याय रही एवं 3863 श्लोक रही 3863 श्लोकोज आर देयर in 60 chapters of Utkala Khanda that belongs to Skanda Purana, in which we find Lord Jagannath and his Leela is glorified in a marvelous way. And we should know that when we think of Lord Jagannath, who is he? Think of a little. ଟିକେ ଭାବିବା ଆମେ ଯେ କାଳେ ନଥିଲା ସଂସାର ନଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିବାକର ନଥିଲା ଆକାଶ ଅବନୀ ନଥିଲା ଭୁବନ ମେଦିନୀ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ନଥିଲା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ we all are in our home, in our residence. Think a little. When there was no house, no building, no construction, what was there then? Just a land. Similarly, when there was no earth, no air, no moon, no sun, nothing. What was there then? कौन ଥିଲା ସେତେବେଳେ? Nothing, only vacuum was there, शून्यता. ସେ କାଳେ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ରୂପ ଏମନ୍ତେ ଗଲା କୋଟି କଳ୍ପ. ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ଥିଲା. ଶୂନ୍ୟରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାତ୍ରା ହେଲା, ମାତ୍ରାରୁ ଓଙ୍କାର ଜନ୍ମିଲା, ଓଙ୍କାରୁ ଜାତ ହେ ଜଗତ, ଶୁଣ ପାର୍ବତୀ ଦେଇଛି ତ. ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ମହାକାବ୍ୟରେ ନିଜେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କିଛି ନଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ଶୂନ୍ୟତା, ଏବଂ ସେ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରୁ from that vacuum, from that emptiness, a sound was created. That sound is none but Om. तो एकाक्षर शब्द सृष्टि है जहाँ आम कहलु ओम. एवं जिते बेले से शब्द सहित when with that sound feeling touch included, it became air. That sound was sky. से साउंड ता थिला शून्यता, ता थिला आकाश, जहाँ आम स्काय बोली कहि परिबा.
एम्प्टीनेस बोली कहि परिबा जितेबले से शून्यता सहित गोटे स्पर्श फीलिंग वाज क्रिएटेड दैट वाज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ताई विवर्तनवाद ये रहा पवन एयर वाज क्रिएटेड जितेबले से वायु रे रंग सृष्टि हला कलर वाज देयर इन एयर इट बिकेम अग्नि फायर जितेबले अग्नि रे रस सृष्टि हला टेस्ट was created in fire it became water एवं जेतेबेले से जल रे से पानी रे गंध सृष्टि हला ताहा हे गला आग मृत्तिका कहिबार अर्थ साउंड शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध एहीपरि भावरे जो 5 ग्रॉस एलिमेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड पंचमहाभूत स्थिति जल पावक गगन समीरा पंचरचितय अधम शरीरा ये पंचमहाभूत सृष्टि हेले किंतु जदि आमे प्रश्न करिबा if we ask what is the root of all these 5 gross elements, then that is Om. And that Om is presented in the form of Lord Jagannath. Lord Jagannath is just a symbol. As you know, Saraswati is the symbolized deity. Power of discrimination. Mahalakshmi, power of donation. Durga, power of tolerance. Similarly, Lord Jagannath is the deity, is the symbolic deity of this world because he is symbolized Om. ओम ही प्रतीक भाव रे आसीचंती जगमोहन जगन्नाथ महाप्रभु होई ओंकार मंत्र सार ओंकार अघहर ओंकार आकार धरिल ओंकार तत्व भारी ओंकार निर्विकारी ओंकार दारू मूर्ति हेल आज फ्रॉम ओम दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड that sound first sound Om and that Om is personified as Jagannath. Lord Jagannath is said to be the origin of everything. Gati Bharta Prabhu Sakhi निवास शरणं श्रुत प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजम अव्ययम as a great tree is originated from a small seed गोटे छोटिया मंजी भितर विराट वृक्ष सृष्टि हला परी गोटाए शब्द ओम रु ये संसार सृष्टि हला एवं से ओम आज पूजित हेउचंती श्रीक्षेत्र रे पुरुषोत्तम धाम रे महाप्रभु होई एवं से महाप्रभुंकर तीनोटी जिनिस पर आमे गुरुत्व दबा चलणी चाहाणी एवं चमक What is the usual behavior of Lord Jagannath? That is known as Chalani. This is according to Nilakantha Ratha Mahoday. Nilakantha Ratha, you must have heard his name. One of the eminent scholars of Lord Jagannath Sanskriti. He says that a behavioral pattern that is practiced every day in the Grand Temple, that is Chalani. Chahani,
What is its inspiration? What is its message? What is its influence upon us? And chamak. Chamak means glory. One thing we should remember, my dear friends, if Lord Jagannath is accepted by all means all over the world. At present, Lord Jagannath is not the deity of Odisha, not the deity of India, but the deity of the world at large. If Lord is accepted by all, if Lord is glorified by all, if Lord is revered by all, it is not for his grand temple or a grand road. It is not for his grand festival. It is for the message, for the consciousness, for his संस्कृति. आज यदि जगन्नाथ महाप्रभु विश्वव्याप्त होइचंती, आज यदि जगन्नाथ महाप्रभु एते सुंदर भावरे विश्व विदित होइचंती, एते बड़ मंदिर पाई नुहे कि एते बड़ दांड पाई, एते बड़ यात्रा पाई नुहे. A flower is accepted for its fragrance. A fruit is accepted for its taste. And our Lord is accepted for his glory, for his consciousness, which we call Jagannath Sanskruti. One thing I would like to enter into the topic. What is Sanskruti? संस्कृति क्या कहवा आम जा मानवानां सुगुणान् तनोति धर्म प्रवृत्ति च दृढ़ीकरोति सत्यानुरक्ति विदधाति नित्यं सा संस्कृति सर्वजनी सुसज्जा. जा मानवानां सुगुणान् तनोति. God has made us as a bundle of emotion. Here in us, there are positive values, there are also negative values. Love, kindness, these are positive things. But when we think of anger, hatred, jealousy, envy, these are negative values. Man is the sum total of different emotions. But Sanskriti, that increases, that motivates us, that reforms us, that modifies us. Kuma sumati kumati sabu urapar rahai nath purana agam asakahai. In Sri Ramcharita Saint Tulsidas has written it. Sumati kumati sabu urapar rahai nath purana agam as kahai. Here is the sumati, here is the kumati. Here are good qualities, here are bad qualities, but Sanskriti is that which encourages positive values. Ja manavanan sugunan tanoti. Dharma pravrutin cha drudhikaroti. Sanskriti is that which strengthens dharma pravruti. What is dharma? What is religion? Religion, we should not encompass ourselves in the thought of Hindu, Muslim. No. That is not dharma. These are just facts. These are just. Dharma is that which enables us to be united with the Lord. Because we have been separated from Him. Ishwara ansa jiva abhinasi Chetana amala sahaja sukhara. In Srimad Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna says, Mamavansa jiva loke jiva bhuta sanatana. That man is a part of mine. Arjun, you should think that
I am the whole, you the part. And the duty of a man is to be united with Lord. महाप्रभुंकर गोटे नाम अच्छी अच्युत. He doesn't like that man should be separated from me. मनीष जे ईश्वर ठू दूरे जाऊ ईश्वर ता चाहते नहीं अच्युत से किंतु मनीष विच्युत ही जाए. महाप्रभु को अच्युत से सबुला डाकुचंती आस आस बोली पाटकी मानू डाकू अच्छी परा संगात अना नील चक्रे हो देख उड़ुछि बाना. I am here to bless you. I am here to emancipate you from the bondage of birth and death. जन्म मृत्यु चक्र रु मु तुमको उद्धार करबा पे अपेक्षा करछि. आस आस. महाप्रभु अच्युत से केबे कोन he doesn't like any separation, but we people being attached to our mundane world, the mundane achievements, mundane pleasure, आमे आमर पार्थिव जगत भितर एमिति बुड़ी जाउछु, we become विच्युत. आमे विच्युत हो जाउछु, we separate ourselves from Lord. And that dharma, what is dharma, what is religion? Religion is that which inspires us to be united with Lord. जीवात्मा परमात्मा सहित किपरि भावरे मिशिबो से मिशिबार प्रक्रियाटी होउछि धर्म. संस्कृति धर्म को उत्थान करे. जा मानवानां सुगुणान्तनोति धर्म प्रवृत्ति च दृढ़ीकरोति सत्यानुरक्ति विदधाति नित्यम. संस्कृति है ताहा that enables us to be attached, to be attracted towards truth. What is the truth? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि जदक्तं ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरम्. मिछ दुनियारे गोटिए सत जगन्नाथ से मो जगन्नाथ मारी पार से ही तारी पार से ही गोटिए हाथ जगन्नाथ से मो जगन्नाथ. देहोपि मूल मिथ्या गुण विगुणमपि कर्म कर्माणि मिथ्या दार गारपि मिथ्या सहज सुत सुता स्नेह भोगादि मिथ्या द्वादश राशि मिथ्या सकल सुरग्रह दिग दिक्तार मिथ्या सर्व जगत मिथ्या नव निरदतनु कृष्ण पी एक सत्य. ये संसार भीतर आम जहाँ सब देखु सब मिथ्या. एकमात्र कृष्ण होउछन्ति सत्य. एकमात्र राम होउछन्ति सत्य. एवं से राम कृष्णंकर मिलित विग्रह जगमोहन जगन्नाथ महाप्रभु होउछन्ति सत्य. से ओम होउछन्ति सत्य. से सत्य प्रति आसक्ति जे सृष्टि करे दैट इज नोन एज कल्चर. दैट इज संस्कृति. संस्कृति डज नॉट मीन दैट practice of singing, dancing. These are just reflections. आमे बेले बेले कहूचु महान सांस्कृतिक कार्यक्रम. कौन संस्कृति सेठी होउछि? से सब संस्कृति रे गोटे गोटे प्रतिफलन होई पारे. These are just reflections, just but essence of music, essence of drama, essence of cinema is modification of human behavior. That is Sanskriti. And when we think about Jagannath Sanskriti, we should know that Lord Jagannath is the Jagat Guru. He inspires us how to be good in our life. And that is beautifully mentioned. That is beautifully presented in that Skanda Purana. जो कथा में से स्कंद पुराण कथा आलोचना करने को जाऊे
आमे बुझीबा टिके पूर्व तो आमे कहूतिले ये स्कंद पुराण आरंभ होला केउठू प्रशांत मिश्र सर कहूतिले ये पुराण सब होचंती महाप्रभुंकर गोटे गोटे विग्रह ये पुराण सब होचंती बांकमय मूर्ति जो भितरे आमे भगवत सत्ता को अनुभव करिबा and we should know that every talk everything has certain tradition प्रत्येक पुराण रो गोटे ट्रेडिशन रही ये ट्रेडिशन कौन होई इस स्कंद पुराण केमती आसिले श्री भगवान भगवतानां च मुख स्खलितम् अक्षरम् एकाक्षर महाबीजम् अनंतं च नियोजयेत् महाप्रभुंकर श्रीमुखार बिंदरु श्रीमन नारायणंकर श्रीमुखार बिंदरु गोटे शब्द थरे बाहरला ओम एवं से ओम परवर्ती पर्याय रे महाप्रभु को ब्रह्मा को कहले ओम बेसी कहवा दरकार ना एंकर नाभि कमल सृष्टि होइतिबा देवता होतनी ब्रह्मा इफ वी एक्सेप्ट श्रीमन नारायण लॉर्ड विष्णु as the origin of this world, who is Brahma? Symbol of knowledge. Huh? Brahma told it to Shiva Shankar, Mahadev. Bhavani Shankaru Bande Shraddha Vishwas Rupenu. Symbol of faith is Lord Shiva. एवं महाप्रभु शंकर स्कंदं को कहले तांका पुओं को कहले श्री शंकर मुखे पंच रात्र उपादान सुनाइला पुत्र स्कंदे प्रभु पंचानन कहिल परम अर्थे श्री स्कंद पुराण मुक्ति पथ दर्शाई को पोट नहीं आन लॉर्ड शंकर इन 5 days which we call Pancharatra told it to his loving son Skanda, popularly known as Kartikeya, Sadanana, and whatever he told Kahila Parama Arthe Sri Skanda Puran, only to have peace, only to attract the human mentality towards Lord. Shankar Bhagavan told it. If we ask, kahinki jaha Purana Varnana karanti, what that epic describes, तारकासुर को बद्ध कला परे भगवान शंकर टिके विषादग्रस्त हेले काशी क्षेत्र रही प्रभु विचार कले तब कथा अमृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कलमशापहं श्रवण मंगलम श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रभु तब कथामृतं तप्त जीवनम योर स्टोरी इज नॉट a mere story, it is the kathamrita. It is something when we listen your story, when we listen your leela, it makes us to have peace in mind and heart. Everything becomes calm. Everything becomes pleasurable. श्रवण मंगलम, सुनते ही वो सब कुछ ओके हो जाते हैं। जो जो कष्ट है, जो जो दर्द है,
जो जो चिंता है हमारे मन में, वो सब कुछ दूर हो जाते हैं जब हम महाप्रभु के अमीय गाथा को सुनते हैं, कहते हैं, और वो गाथा के पीछे जो रहस्य है उसे जानने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न रखते हैं। एंड व्हेन शंकर भगवान टोल्ड एवरीथिंग टू कार्तिकेय हिज सन, देयर वाज जैमिनी। स्कंद पुराण प्राथमिक पर्याय निजे जैमिनी स्वीकार कर कथा। पूर्व काल कार्तिकेय धीर सुशांत महाशय, शिवंक मुखरु शुणिले से पुणी ऋषि मुनि मेले, मोर पूर्व भाग्य थिला दैवे से संग मिलिला। When we open that Skanda Puran, holy pages of Skanda Puran from the beginning, Muni Maitreya admits that it was my good luck that I was there when Shankar Bhagavan told this story of glorious story of Lord Jagannath to his son Kartikeya. And what Jaimini had listened from Shankar Bhagavan, he has re-narrated it before all the intellectuals, these are intellectuals whom we call Muni, sages, saints. In this way you can understand it. And beside the holy river Ganga, Jaimini Rishi, Saint Jaimini, has presented all the things regarding Lord Jagannath, and that is known as Skanda Puran, the essence of Skanda Puran. And still now, what we have discussed, from one sound, Om, this world is created, and that Om is personified as Lord Jagannath. I would like to repeat, as you all are intellectuals, we must know the symbolic value behind the deities of us, whom we worship in our day-to-day life. We worship Goddess Saraswati, symbol of judgment, power of discrimination, what is right, what is wrong. That Saraswati is in us. All the beautiful qualities, all the positive qualities we worship in the form of gods and goddesses. But we should remember that. We have created God only to worship our positive values. And that Lord Jagannath, who is presented as the symbol of Om, and we call him Lord of this world, because from that Om this world is created. Jagannatha, Natha. Beyond him there is nothing. Beyond him there is nothing. He is the only one. He is only and he is one. Leave it. And that is Skanda Puran, it has been written. Besides, think a while, there is the holy bank of river Ganga, a great dais is there, and Jaimini, Saint Jaimini is there on the dais of Vyasa. He is the speaker, chief guest. He is the chief guest to narrate all these things. And now the intellectuals, the saints of that time asked, Sir, Purushottamacham sumat khetram param pavanam
जात्रास्ते दारवतनु श्रीशो मानुष लीलया। जात्रास्ते दारवतनु श्रीशो मानुष लीलया। श्रीशो मीन्स, श्री मीन्स लक्ष्मी, लक्ष्मी का बेटर हाफ हे नारायण। मानुष लीलया, Lord Jagannath is the husband of Mahalakshmi, is doing everything like a man. In which form? In wooden form, in a log form. Purushotamacham. Question is asked to Jaimini, oh dear Guruji, सेही पवित्र क्षेत्रवर पुरुषोत्तम नाम जार। That holy land which is popularly known as पुरुषोत्तम क्षेत्र, केउ पुरुष निर्माणीले विस्तारी कहिबा जे बोले। Who has created this Purushottam Kshetra? Kindly explain it in detail. This thing was requested by the intellectuals to Jaimini. जो भगवान को मैं अपुरुष बोली कहू, जो भगवान को मैं कहूँ न तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान कर कौन से प्रतिमा नहीं, भगवान कर कौन सी इमेज नहीं, स्टैच्यू फॉर्म जो भगवान कर नहीं। निराकार निरंजनम निरंजनम महाशून्यम, महाशून्य मध्य ज्योति तज्ज्योति भगवान स्वयं। जो भगवान को निराकार कहा जाए, नो फॉर्म, नो शेप, नो कलर, नथिंग, ही इज द एम्प्टीनेस। शून्य आकार, शून्य प्रकार, शून्य रे शून्य देही, शून्य गमन, शून्य रमण, शून्य रे भावग्राही, शून्य पुरुष से ही सबु शून्य कले पाई जीवु तुही। इफ लॉर्ड हैज नथिंग, से पुणी दारू देह धरी नीलकंदरे विजय करी। व्हाट फॉर दैट लॉर्ड, दैट ओम टेकिंग लॉग फॉर्म is received in a Purushottam Dham? That was the question. Everybody knows that Lord has no form. Rupam rupa vivarjinasya bhavato jnanena gatkalpitam. No figure is there, no shape is there, no form is there. No tasya pratimasti. That Lord, what is the reason behind it for which he became a log? And he is received in a Purushottam Dham, in a Puri. What is? Badattam badatam shrestha sarvalok guru mune. Badattam badatam shrestha. Badattam. Tell us. Sarvalok guru mune. You are the guru, you are the teacher of all of us who we are present. श्रोतुम इच्छा महे ब्रह्मन परम कौतूहलम ही ना। That a very surprising aspect. That Lord may be the form of a man, may be any other form, but it is there. Padana hi jaro hato dhagoda nako chi hele नहीं दुही पूरा। पाद नहीं जारो हाथ धागोड़ा नाक अच्छी हेले नहीं दुही पूरा। उठ चापी हसुछि ठाकुर नहीं कान चिन्ह वर्ण तथापि जग मोहन। No leg is there, half hand,
no G's without any way for inhaler or exhale air, no ear, nothing. Is you Lord? What for he became such surprising, such wonderful form? That is the question of intellectuals at the beginning of Skanda Purana. When Jaimini heard that question, became very happy. We teachers, we become happy when we get good students. Those businessmen, they become happy when they get good customers. And those speakers become happy when they get good listeners. I speak all these things because you are here. Thank you very much for your kind cooperation and kind participation and having interest to know something regarding Skanda Purana and Lord Jagannath. I think Lord is the soul of us. You think a little, when Corona is there, all of us pray, Lord Jagannath. ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା, କେହି କହୁନାହିଁ ସେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଶିବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ରାମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କେହି କହୁନାହାନ୍ତି. We may accept Lord or not, that does not matter, but from the inner part of our heart, I repeat again, from the inner part of our heart, there is a voice, Lord Jagannath will save us from this COVID-19. From this problem, all the intellectuals have been defeated at a little virus, Corona. All the scientists have raised their hands. We are undone. And when all the powerful people became powerless, declare themselves powerless, we worship Lord Jagannath and we have faith that Jagannath will help us. Because he is the creator. He is the creator. Leave it. Jagata jana mana mohana navadhana murati gati mukti data Hira Sindhu Vihari Karuna Karahari Parama Nanda Visopita He Bhavagrahi Bhavasagara Nabo Hoi Karuna Una Karo Nahi Onayasare Jiva Parikara Madhava Patito Jane Kara Trahi He Bhavagrahi. We all are crying, oh Lord, we have been helpless in this problematic period. You, the only Lord of this earth, you, the only lover of all the beloved, all the devotees in this world, help us, save us, oh Lord. We know that once upon a time, there was a demon known as Hiranyaksha. But a Rakshasa thila, jar namo thila Hiranyaksha. He took away this earth and submerged in the deep ocean. Samudra bhitarku chali gala prithvi maa ko nahi. And Lord Vishnu, his Varaha avatar, जो बराह अवतार रे महाप्रभु पृथ्वी को उद्धार कले. पृथ्वी को उद्धार कला परे ब्रह्मा को सृष्टि कले निजर नाभिरु गोटे पद्म सृष्टि हला. लोटस इमर्ज्ड फ्रॉम द
naval center of Lord, and from that lotus, holy lotus, Brahma took birth. Lord had ordered Brahma to create the whole world. भगवान ब्रह्मा को ही आदेश कले तुम्हें सारा संसार तैयारी कर। कीट पतंग तरु तृण एवं ते करिले निर्माण, मनुष्य पक्षु पक्षी आदि तीर्थ रचिले यथा विधि। And after being ordered by Lord, Brahma started creating everything. This is sky, moon, sun, trees, hills, reels, everything. प्रत्येक जीव मान को ब्रह्मा तैयारी कले। ब्रह्मा तैयारी कला परे शेष मनीष निर्माणिला जही विश्राम सर्वलीला। ये ब्रह्मा कौन कले? सर्वशेष मनीष तैयारी कले। मनीष को प्रभु तैयारी करते। One thing you should remember, my dear friend, if we are here, there is certain purpose. Is not it? Behind every work there is a man. Behind every man there is a purpose. Without any purpose, no work is there in this world. If God has created a man, जदि भगवान मनुष्य को तैयारी करिसंती, ये मनुष्य तैयारी करिवा पछरे भगवान का उद्देश्य कौन? This life is a chance. This life is an opportunity to get nirvana, to get liberation, to get emancipation. It is because in our Hinduism, in our Hindu concept, this world, this mundane world is treated as a more well. गोटे पंकर कूओ सुख बोली जहा जन नेत्र दिशे, हाथे आसे हाथू पड़िबा पाई से, वस्तु नुहईटी अटई से धूम, अन्य नाम तार आकाश कुसुम। What we think of pleasure is not pleasure. Rather, there is the origin of pain. What we think of happiness is not happiness. There is the seed of sorrow. We should know it. Therefore, all the intellectuals are not happy with this mundane world. They always worship Lord, they always think of their life. Durlabha nara porevara devata bhajana mandira. If God has given us this life, it is to worship Him, and through worshipping the worshipable, our life become wonderful. आपण माने समस्ते विज्ञान जनता पर चिंता करंतु, खाली फूलटा को कई कैबल्य कहती ना, किंतु जिते बेले गोटे फूल महाप्रभु ठारे लगी हो गला, से फूलटी कैबल्य हो जाए। खाली माने that only rice which we cook, our mother cooks rice. Do we call it prasad? No, it is just rice. But when we offer that rice to Lord, it becomes prasad. Its value increases. Similarly, when we surrender our life at the lotus feet of Lord, our life becomes more valuable. Our life becomes more wonderful. And the purpose of my talk is
Let's surrender ourselves. Don't run after tenders. Run after surrender. Don't run after properties. No. Run after properties. Don't think that I have achieved all these things. Rather think that I have been awarded all these things by Lord. Those people who say, I have sought. Building is there, cars are there, bank balance is there. They people think that they have achieved everything. But one thing we should remember, we have not achieved, we have been awarded by Lord. We have been awarded. A story will relax you a little. A man, after being affected by corona, get admitted in hospital. Please. Mute yourself, sir. Mute yourself. It creates disturbance. जो मैंने असंते टिके हाँ. Sucharita ma'am, please mute yourself. Sucharita ma'am, please mute yourself. ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପଛରେ ସାର୍ କହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କଥା ହେବେ ହେଲା. All are allowed to ask questions. I will give you time. Even assure you, if you like, we may take another session in the future. Thank you all. Please don't mind. The man, after being affected with the corona, get admitted in hospital. By grace of Lord, he became okay. And when he was released from the hospital, bill was there. And in the bill, oxygen bill was more than 50,000. That oxygen bill, because he was in ICU. That man started crying. People asked, sir, what for you are crying? Now I am crying for this bill, for that oxygen bill. Only for 2-3 days I remained in ICU, and that bill became such for oxygen. Thank God, from my birth till date, He has supplied me oxygen without any cost, without any payment. Please, dear friends, at present ask yourself, He is Lord who had arranged a father, a mother, a home, a society before my birth. He is Lord who arranged oxygen without any payment at the tip of my nose, feeding in my mother's chest, everything. के सरी की प्रभु पढ़े नीलाद्रि के सरी की. No one is comparable to Lord Jagannath because He is the Creator. If God has given us this beautiful life, यह भोगो पाई नुहे भक्ति पाई. It is not for enjoyment. Don't enjoy your life, rather use your life. Use. It is not for enjoyment, it is for use. In which way we should use our life? Should we all become saints? Should we all leave our residence and go to forest? No. I am in my house, I have the family too, but at least be grateful to Lord. Oh Lord, you have given me everything. You have given me everything. मुझे मेरी मालिक बहुत कुछ दिया है.
Oh Lord, thank you for your gifts. Again I repeat, we have not achieved anything, we have been awarded everything. I have not gained, I have been gifted. At present, my conscience says, I don't need properties, I need proper time. Proper time means proper relation with Lord. That will enlarge the scope of my life, that will enlarge my prospect of liberation. ये मनुष्य जीवन आमको मिली माया पाई नुहे मुक्ति पाई, विषय पाई नुहे विभूति पाई। दुर्भाग्य जमिति बादल, sometimes a cloud covers the sun. Similarly, man becomes affected by this mundane attraction. मायया मोहिता सर्वे जना अज्ञान संयुता कथमे संभवेन मोक्षो इति ब्रह्मा विचिंतयन्। ब्रह्मा तैयारी कले भगवान को निर्देश रे सारा संसार शेष को मनुष्य तैयारी कले, किंतु ब्रह्मा हठात दुखी हो गले जे जो मनुष्य को से तैयारी कले से मनुष्यटा मायाग्रस्त हो गला, विषयग्रस्त हो गला, माने बिकेम सोर्स ऑफ नेगेटिविटी, गोटे नेगेटिव हो गला मनुष्यटा। से ब्रह्मा महाप्रभु को प्रार्थना कर, जगत करता स्वामी जगत पालक जगत स्वरूप तुही जगत नायक। जगत शरीर तुही रही आत्मा रूपे जगत पाई अबुझा प्राय प्रतिकल्पे। जगत जित कामना शरण रक्षक जगत करता स्वामी जगत पालक। ओ लॉर्ड, you the creator of this world, you the creator of this Brahma, and according to your advice I have developed everything, I have made everything, even with the use of all my intellect. I made that man with the hope that he will try himself to get liberation. But unfortunately, I am shocked to see that man has been a representative of negativity. Unfortunately, that man has been the source of all the evils. His thought is spoiled, being attracted towards this mundane world. भगवान चाहिए कहले कौन कहूच अनाद्य विद्या सुदृढ़ा दुश्चेद्या कर्म बंध नहीं प्रभवंत्याम कथं तस्याम हीयते मृत जन्मनि। प्रभु ये अविद्यार एमिति वशवर्ती हो गला, ये मनुष्यटा ये मायार एमिति वशवर्ती हो गला से मुक्ति पाई चिंता करूनी, खाली मु मोर भितर फसिला। आई एम सच एंड माई नीज सच फसिला। अनादि अविद्यारे पड़ी निज निस्तार पथ हुड़ी एमंत मायावश जीव उद्धार हेबा असंभव। भगवान हसिले कहले पानी भितर रहिबो कहिबो मु ओदा हेबिनी, निया भितर रहिबो कहिबो मु उषुम हेबिनी, अविद्यार वशवर्ती हेब कहिबो मु मायाग्रस्त हेबी नहीं, दुखी हेबी नहीं, केमती हम? तेणु मनुष्य तार दुख पाउछि पाउ,
ब्रह्मा कहीं मन दुख करुछ ब्रह्मा हाथ जोड़ी देले कहले प्रभु मु परा ये संसार को तैयारी करिछि छुआटा जदि खराब हो बापा मां को खराब लागिबो छात्रटा खराब हेले शिक्षक को खराब लागिबोनी आज I am the maker of this man according to your order according to your advice I become sorrowful एठी भगवान गोटे बड़ सुंदर कथा कहउछन स्कंद पुराण प्रथम अध्याय मैं सारुचे प्रथम अध्याय समय भी गलानी सागरस्य तरे तीरे महानद्या सुदक्षिणे स प्रदेश पृथिव्यां हि सर्वतीर्थ फलप्रद जेते बेले ब्रह्मा जाई भगवान को निकट रे प्रार्थना करिछन ठाकुरे आपणकर आदेश रे तैयारी करथिवा मनुष्यटा नष्ट ही गला मुक्ति पाइबो केमिति सागरस्य तरे तीरे महानद्या सुदक्षिणे महानदीर दक्षिण भागरे समुद्र कूलरे बंगोपसागर कूलरे प्रदेश पृथिव्यां हि सर्वतीर्थ फलप्रद से जो जगहटी रही ताहा पृथ्वीर समस्त तीर्थर फल दान कर ब्रजनाथ बड़जेना बड़ सुंदर लिखिଛନ୍ତି प्रिय दर्शक बंधु श्री राधा बर चरण को चिंती कहूछि जहा सुण हे सुमती दक्षिण सिंधु तटे पुण्य धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जार नाम जे जही विजे जग नाथ जे बलभद्र भद्रा सुदर्शन जे चारि मुख तीव्य कत जे से जो क्षेत्र अच्छी जाओ ब्रह्मा तत्र ब्रज महाभाग दृष्टवा मां ध्यायत स्तव सेठी ब्रह्मा जाओ सेठी मते देख मोर ध्यान कर मोर स्तव कर पुरुषोत्तम क्षेत्रे जाई मोहर पद हृदय ध्याई क्षेत्रर महिमा देखिबो वैकुंठ गति को लगे से क्षेत्र रे पहुंचला परे निश्चय मते ध्यान धारणा कले तुमे वैकुंठ प्राप्ति हेबो एमती कथा कहू कहू स्कंद पुराण प्रथम अध्याय सरिला दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्कंद पुराण हियर one line perhaps you have been lack of patience to hear me I would not like to continue this again let's stop here one line just synopsis in the first chapter of the Skanda Puran Brahma has been too worried to see the negativities of mankind and he has requested Lord Vishnu what is the way kindly inform me what is the way to get emancipation and Lord advises Brahma go to that Purushottam Dham go to that Sri Kshetra and worship me there is the Lord Jagannath by worshipping him we get liberation एमती स्कंद पुराण प्रथम अध्याय सरुची प्रथम अध्याय बढ़ुची परवर्ती पर्याय ब्रह्मा जाइछंती कोन कोन घटिची ए स्कंद पुराण तो आमे कहिचे जे 60 अध्याय रही 60 जाका अध्याय गोटे सेशन रे सारिबा केबे संभव नहे जति केला लेट्स थिंक इट आज जस्ट एन इंट्रोडक्शन इट इज जस्ट ए गेटवे टू एंटर दैट ग्रेट इपिक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भाग भवेत् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम शांति 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 थैंक यू सर थैंक यू सो मच आपण बहुत सुंदर भाव बुझे देले इंग्लिश हिंदी ओडिया सब भितर आमे एते बढ़िया लागिला आमे जानि पारलुनी आमे कोठी अछि वर्तमान सर मु अनुरोध करिबी हम पार्टिसिपेंट माननकु जदि आपण माने चाहिबे आमे ए जो आज इंट्रोडक्शन सुनिले आ परवर्ती स्टेज रे हमको प्राय 11 दिन बा 12 दिन लागिबो
आमे जदि रेडी रहिबा ताहले सार को अनुरोध करिबा तार जहा फॉर्मेलिटीज अछि करिबा एवं शनिवार रविवार 2 दिन गोटे गोटे घंटा सार को सुनिबा ताहले मो सार को अनुरोध करिबी नेक्स्ट सैटरडे संडे रे आमे सार को अनुरोध करि परिबा तनु आपण माने आपण मान को फीडबैक रे से लाइन टे लिखिबे जदि फीडबैक फॉर्म रे लिखिबे ताहले मो सार को अनुरोध करिबी This is for the information of all the participants. You please, if you are interested to continue this webinar of Skanda Puran, it will continue altogether 10 or 11 days. If you will gist it. So, I'll request sir, if you are interested, please write down in the feedback form too. And will let me know how many of you are interested. Then we'll request sir to enlighten us about Skanda Puran. So, thank you very much. And now I want to present a small memento to our guest of this afternoon to remember us. And before I'm requesting, may I request Dr. Guru Prasad Mahapatra Sir to receive this small memento, a token of love on behalf of all the participants and on behalf of Odisha State Forest Scouts and Guides and on behalf of Mahasi College of Natural Law. Thank you. Welcome. Thank you, sir. Now, I request Dr. Urmi Devi, the senior reader in Odia, Department of Odia, Mahasi College of Natural Law, to propose the vote of thanks. Over to Urmi ma'am, please. मैडम टिके जोरे कहिबे आपण भरिष्ठ स्लो आसुची और टिके स्पीड मैडम और टिके जोरे सुना जाउनी क्लियरली वेबिनार रे आम मानक अनुप्राणित करिथिबा मुख्य वक्ता डॉक्टर गुरुप्रसाद महापात्र महोदय आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करूछि। अष्टादश पुराण मध्यरु बृहत् पुराण स्कंद पुराणर प्रथम अध्याय संपर्क रे डॉक्टर महापात्र तांकर सारगर्भित भाषण श्लोक गीत माध्यम रे आम मानक हिंदी इंग्रजी संस्कृत और ओडिया भाषा रे जेपरि भावरे भक्ति रसात्मक वाणी तथ्य प्रदान करछन्ति ताहा एई कोरोना महामारी समय रे मंदिर को जाय देवदेव दर्शन रो वंचित आम समस्त को भगवत पीठ दर्शन रो आश्वासन और चेतना देई परिला सेथि पई आध्यात्मिक कथामृत प्रवचक तथा इंग्रजी अध्यापक डॉक्टर महापात्र को पुनश्च धन्यवाद अर्पण करुछि। डॉक्टर श्रीमती नमिता पटनायक को महर्षि महाविद्यालय अर्थनीति अध्यापिका तथा राज्य स्काउट गाइड यूनिट असिस्टेंट कमिश्नर तथा एही वेबिनार संयोजिका श्रीमती पटनायक दिने व्यवस्था रे आम मानक एकत्र एपरि अनेक वर्चुअल अधिवेशन रे सामाजिक पौराणिक नैतिक शिक्षा और दायित्व संपर्क रे विशेषज्ञ मानक द्वारा सूचना और तथ्य जानिबार सुजोग प्रदान करछन्ति ताहा निश्चित भावरे एक स्वागत योग्य पदक्षेप। तेणु एही वेबिनार रे उपस्थित प्रत्येक अंशग्रहणकारी ମାନଙ୍କ तरफରୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଶେଷରେ ଏହି ୱେବିନାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଶୁଭକାମନା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आम समस्त तरफ आपन को अनेक अनेक धन्यवाद।
आम सागे एमती जोड़ी रुहंतु मैडम नमस्कार। मु अनुरोध मैडम करिबी नमस्कार। गोटे मिनिट टिके टिके अपेक्षा करंतु। हाँ प्रदीप भाई आपण के कहबा को चाहूचंती मु जानि परची किछि हाँ क्वेश्चन मैडम। मध्य हाँ मु जानि छी आपण मानकर किछि क्वेश्चन अछि जेहेतु आमे समय को क्रॉस करी जाइछे तेणु खाली टिके अनुरोध करिबे प्रदीप भाई आपण गोटे प्रश्न किछि पचारंतु एवं आगामी दिन रे एटलीस्ट आमे गोटे दिन निहाती बसीबा सानक सहित स्कंद पुराण रो द्वितीय अध्याय को जिबा एवं पुणी आगामी दिन रे आउ टिके ताको स्क्विज करी निश्चय रहिबा हमर 100 जन हुंतु 50 जन हुंतु जेतिकी जन हुंतु आमे निश्चित भाव रे मु जानि परजी आपण मन बहुत आग्रह प्रकाश करूचंती मु एठी अनुरोध करबी डॉक्टर महापात्र सार को से आम मान को निश्चित किसी समय देवे एवं ए पुराण बाबद रे आम मान को टिके निश्चित आप्यायत करेबे तांगा अमृत बाणी रे आगामी दिन रे आज ठारू आमे रहिला अनुरोध शनिवार दिन आसंता शनिवार दिन जदि सारंकर को समय होचे आमे टिके कथा हबा एवं सेटा पुणी फिक्स अप करिबा आ प्रदीप भाई आपण कोन क्वेश्चन पचारियो चाहउचंदी प्लीज पचारंतु। मैडम मैं आपको गोटे रिक्वेस्ट करिया चाहूची आज्ञा जे मैडम भगवत गीता हमर जो भगवत गीता अछि भगवत गीता रे मोर जा डॉक्टरेट सरी वो डिलीट चल जे हेलो आज्ञा मैडम मते गोटे जो जूम मीटिंग हो मते गोटे टॉक दा भाई कहले आपण भाई स्थिर उपकृत हेबे। अच्छा अच्छा आपण कहिबा पई चाहउचंती मैडम मैडम हाँ हाँ ओके ओके प्रदीप सर थैंक यू वेरी मच आई एम रियली ग्रेटफुल सर आपण मोर फोन नंबर अछि मो Okay, नंबर madam. ता हां मते कॉल करबे हमें कथा हबाई बादरे बहुत Okay, madam. धन्यवाद आ मु Okay, मध्ये आपण मान को जणाई दउची हमर गोटे गीता ऊपर 6 मास पई की महाराष्ट्र ओडिया वेलफेयर एसोसिएशन एवं श्री जगन्नाथ चिंता और चेतना वर्ल्ड वाइड एवं आउ मानव अभिधान केंद्र एमती तीनोटी संस्था मिसिरी करूछंती मु Okay, madam. बहुत मोर बंधु मान को देइछि समान से जॉइन करछंती सुनुछंती आ बहुत खुशी लागुछि जे आमे ए कोरोना भितरे माने भगवान हमको केमती जोड़ी दैछन एकाठी आमे कोरोना को भूली जाइछे भगवान सतारे निजको हजेई दैछे ए होछि हमर जगन्नाथ संस्कृति सो आसंतु पुणी आगामी दिन रे सुनिबा आज जो पिला माने जो सार माने जो मैडम माने आज प्रथमे जॉइन करिथिले आमे आपण माने जानंती से मान को उत्साहित करबा हमर धर्म तेणु आज रो ए कार्यक्रम रे जो दुई जण प्रथमे जॉइन करिथिले मु अनुरोध करबी आज रो मुख्य स्पीकर चीफ स्पीकर को से तांको सर्टिफिकेट प्रदान करिवे वर्चुअली से माने बहुत खुशी हेबे प्रथम व्यक्ति होचंती बनजा मैडम she is from Karanjia lecturer in education PWDC college women's college Karanjia सुदूर करंजिया रु जोग देइथिले मु अनुरोध करिबी बनजा मैडम वर्चुअली रिसीव करिवे फ्रॉम डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्र सर प्लीज हैंड ओवर। धन्यवाद धन्यवाद आज्ञा 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 जी जी आज्ञा ओके बनजा मैडम प्लीज रिसीव। थैंक यू मैम। ओके शो करले भलो हंता आज्ञा आज्ञा आपण माने हाँ से देखेबे से पाई गेले देखेबे मो तांका बेस स्प्रेड कर दोची देन अनदर बॉय सी इज फ्रॉम कुशलेश्वर आंचलिक महाविद्यालय सौम्य प्रकाश दास आर यू देयर सौम्य आर यू देयर Sipon please receive yes he was there I have seen Sipon may I request Sipon Samya Prakash please receive Kushaleshwar Anchalik Mahavidyalaya okay so it's nice to get a speaker like Dr. Guru Prasad Mahapatra आज गोटे छोटे सुंदर कथा रे मु तांको देखिली जानि परिली आमे सांग सहित बहुत अभिनय करिचु महाराष्ट्र ओडिया वेलफेयर एसोसिएशन तरफ रु ए स्कंद पुराण रे आमे 18 दिन धरी सांगटो सुनिचु एते सुंदर लागिला मोर मन हैला मु जदी किछि काहा को बांटी परिबी एई धन
ए धन जोटी पहुंचीबो से तो निश्चित महान हबो आ मु ए धन जदि टिके काहा काहा देई परिबी मु निज को बहुत गौरवान्वित मन करी तेणु मोर अनुरोध रक्षा करी सारा आज पहुंचले आम गहन रे एवं इतने सुंदर भाव एते प्रांजल भाव में बुझे देले भाबुची जो अदर स्टेट रु हम संगे अच्छे सतीश जी एंड ऑल अदर्स मिस्टर झारखंड रु अच्छे समस्त बहुत सुंदर भाव में बुझीथे एवं आपण मान अनुरोध रहिला व्हाट्सएप बर्तमान जो देछि लिंक आपण माने निश्चिंत भाव में से लिखिबे एवं हमें सार को ये अनुरोध करिबु सार निश्चिंत रहिबे हम संगे आगामी दिन रे आमे आ गोटे दीटा सुनिबु तापर हमें समय आज्ञा। फिक्स करिबु आपण संगे सर आज्ञा। आपण आज आम मान गहन रे रही हमको आज एते सुंदर बहुत भाव में धन्यवाद बुझेई देले हमें सेति पई आपण पाखरे चिर कृतज्ञ थैंक यू सर धन्यवाद वेलकम थैंक यू सर वर्तमान आमे माने एक कार्यक्रम एडी सारीबा आम मान गहन रे बहुत बहुत सुंदर सुंदर व्यक्तिगण अच्छा मु देखी पारुची से वीडियो रे बहुत वयस्क व्यक्ति माने अच्छे समस्त को मोर नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानकु ए कार्यक्रम किपरि लागिला मु यूट्यूब रे ए प्रोग्राम टी को छाड़ी देबी आपण माने देखि परिबे शेयर करि परिबे सेटा अच्छी डॉक्टर नमिता पटनायक चैनल रे आपण देखिबे आहुरी आ पूर्व हमर जिते जगन्नाथଙ୍କ ऊपर प्रोग्राम हेची सेतिर अछि आपण देखि परिबे एवं आपण मानक सजेशन मध्ये देबे आमे आगु को आउ कोन कोन भला जिंस करिबा जे पर्यंत ए कोरोना न जाईची आमे ए आध्यात्मिकवाद जिंस को एते सुंदर चारिपटे घेरै दबा जे कोरोना हमको छुई परिबनी थैंक यू ऑल थैंक यू वेरी मच जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ